Have you drawn the figure? No, sir. Sir, drawing done. Okay. Then you tell me. तो फिगर थोड़ा घूम हो जाएगा, वो दिखावा दिखने लगता है DA से केमिकल। Yes, sir. Clear visible नहीं है sir. Values. Okay. Now? Yes, sir. अब दिख रहा है। बना दिया। Now you write something. Consider a plate in XY plane. This is the section and this is the plan. Consider a plate in the XY plane. If load is applied on the plate, it undergoes a small displacement or deflection, small displacement W perpendicular to the XY plane, as we are figure shown in the section. This is the plan in the XY plane and that is the section. The Z axis is like this. So, there is a deflection in the Z direction. If we consider a section of the plate, if we consider a section of the plate with its middle section, slope of the middle surface in the x direction, small I x is equal to
del w by del x, and slope in the y direction it is del w by del y. This is the point A and A1. The difference, now before that, if we take any direction n, if we take any direction n, making an angle alpha with the x axis, making an angle alpha with the x axis. We find that the difference in the deflections of the two adjacent points, we find that the difference in the deflections of the two adjacent points A and A1, A and A1 in the AN direction, in the AN direction. Difference in deflection, this is A point, this is, it is bent like this. So, there is a difference between these 2 point deflection dW. So, dW is equal to del W upon del x into dx. चूंकि जमाते हैं ना कि यूनिट डिफ्लेक्शन इतना है तो मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस dx कितना होगा d. The slope divided by dn. Now, from this figure, sin alpha and cos alpha, who will tell me? These are the sides dx, dy. Sin alpha dx upon dx. Yes. Cos alpha dy upon dx. Sin alpha, Sin alpha dy upon yes, dy upon dx, and this is dx upon. Put the value here.
equation number 1 for this purpose, small one you may write. To find the angle alpha such that del W by del N is max, you write in the next step. To find the direction, or you may write again, to find the direction alpha 1, to find the direction alpha 1 for which the slope is maximum, to find the direction alpha 1 for which the slope is maximum. For which this equation 1 is equal to 0. To find the direction alpha 1 for which the slope is maximum, we equate it equal to 0. So, then del W upon del X cos alpha 1 del W by del Y sin alpha 1 is equal to 0. So, tan alpha 1 what is the value of tan alpha 1? This is minus sign because this is down is the minus. In this axis it is minus. Any one you can take minus. I think y, if it is x, this is y, then y is minus. So, from here tan alpha 1 is equal to del W upon del Y upon del W upon del X. हाँ बोलिए. नहीं, फ्रॉम हियर इक्वेट 0 तो क्या हुआ, tan अल्फा 1 क्या मिला, कुछ गलत हो रहा है. साइन अपान कॉस, ऊपर x आएगा. ठीक.
Now, if we make a triangle alpha 1 del w upon del x and del w upon del y, what is the value of this hypotenuse in a perpendicular triangle? Under root of Yes, under root of del w by del x square plus del w upon del. What about the others? Kunal and Abhijit, are you getting me? Yes, sir. Clear? Yes, sir. If you have any problem, you can ask. So, del w upon del n is equal to del w upon del x cos alpha 1, you can say del w upon del y sin alpha 1. Put the value of cos alpha 1 in terms of this. Cos alpha 1 क्या होगी? On this triangle, value of cos alpha 1 del w upon del x divided by under root of स्क्वायर है ना? yes sir square Yes. Value of sin del w upon del y minus 990. this is max. Now, because we choose the angle alpha in the initially maximum for maximum slope, therefore, it is max. You can write this. Now, what you will get finally? If you solve this, what you will get by taking LCM and all those? Under root of del w upon del x square minus del तो एक नेगेटिव आएगा तो एक नेगेटिव लेंगे ना क्या चीज? तो एक टर्म नेगेटिव लेंगे ना डाउनवर्ड टाइम नहीं, वैल्यू के लिए नेगेटिव पॉजिटिव की जरूरत नहीं है. समटाइम्स इफ यू कंसीडर द एब्सोल्यूट वैल्यू, you need not take the sign, you can avoid the sign. Okay.
you want the value, and so you can write. So by setting, what about the others? You solve this, na? Take the LCM. नेगेटिव लेंगे तभी आएगा सही आंसर जो है ना अंडर रूट तभी आएगा सर नेगेटिव लेंगे तो क्यों? LCM लेना है. LCM क्या होगा वो, और ऊपर क्या आएगा, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स, डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स. ओके यस यस सर इसको 1/2 लिखेंगे तो कट जाएगा वो, है ना. यस सर अभिजीत सॉल्व हुआ क्या ये? Yes, sir. It is simple. You take the LCM this root is LCM, and here it is w by del x plus del w by del y. So this is the LCM, means 1/2 means under root, and this is full. So if you divide full by under root, you will get half. So therefore you get the half, means under root. Okay, it is very simple. You take the LCM, here top, on the top del w del x, and this is del w by del y. ओके, और स्क्वायर आ ही गया ना यहाँ तो. हाँ सर. हाँ, स्क्वायर आ ही गया है. एंड इफ यू डिवाइड दिस यू विल गेट द स्क्वायर है, पर इट इज 1. इट इज 1 एंड इट इज पावर 1/2 अंडर रूट का मतलब. सो यू विल रिसीव 1 minus 1/2 is equal to 1/2. So by setting the expression 1 equal to 0, or if you want to write according to book, it is the 1 2 3 instead of A B C you can write. We obtain the direction for which the slope of the surface is 0. For which the slope of the surface is 0. The corresponding angle alpha 2 is determined from the equation tan alpha 2 is equal to minus del w upon del x del w upon del. The corresponding, हाँ लिखना है, the corresponding angle alpha 2 is determined by del w by del x del w upon del y with the minus sign. Now if you multiply tan alpha 1 tan alpha 2, you will get minus 1. कौन सी होती थी वो कोऑर्डिनेट, उसमें पढ़ा था ना, लास्ट टाइम भी पढ़ा था m1 m2 स्लोप. कोऑर्डिनेट में पढ़ा हुआ है अपन ने, बेसिक इन 11th क्लास आए. tan alpha 1 tan alpha 2 is equal to minus 1, because if you multiply this, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? हाँ, m1 m2 is equal to minus 1. Now we talk about the curvature 1 upon r. Now let us talk about the curvature. कोऑर्डिनेट में कैसे करेंगे इसको प्रूव? कर सकते हैं कोई? Let us try. Let us revise our
previous knowledge. Okay, theta 2 and theta 1, A dash, theta M, A1 B1 two line cutting and AB line cutting, two lines are cutting. M1 is equal to tan theta 1 and M2 is equal to tan theta 2. कोई थ्योरम पढ़ा था? दिस एंगल इज, तीन एंगल के बीच एनी कनेक्शन बिटवीन थ्री एंगल्स इन ए ट्राइंगल. सम ऑफ द थ्री एंगल्स इज 180 है ना. तो यहाँ एंगल जो है उसका बचा हुआ इनका सम होगा कि नहीं होगा? This is total we know and this total also know. So theta 1 is equal to theta plus theta 2 होगा क्या? Outer angle is plus of these two because so theta is equal to theta 1 minus theta 2. Agree? Tan theta, if you put tan theta is equal to tan theta 1 minus theta 2. What is the tan A minus tan B? tan A minus tan B हो जाएगा. Formula for tan A minus tan B. Tan A minus tan A minus tan B. Tan no. For the formula for tan theta, tan A minus B angle, there is some formula. So it is tan A minus tan B, 1 minus tan A tan B, if you remember. If the two lines are parallel, then theta is, these two lines are parallel, the theta is zero. So tan theta is tan 0 is for the two lines are parallel. Pradeep? Zero, sir. Yes. If we denote the slope of the two line with m1 m2, then m1 minus m2 upon 1 minus is equal to 0. What you will get? M1 equal to M2. M1 is equal to m2. And if the two lines are perpendicular to each other, then theta is 90. Yes, if the two lines are perpendicular, theta is equal to 90. So tan 90 is 1. So what you will get? Yes, sir. No. Tan theta is infinity, I think. Tan 90, not 1. Tan 90 is infinity. Sorry, sir. Infinity. Yes, infinity means 1 by 0. This is equal to 1 by 0. So you multiply, cross multiplication. What you will get? M1 equals to 1 by M2. Inversely, M1 inversely. M1 M2 is equal to minus 1. Yes, sir.
1 1 ओके नहीं मुझे तो -1 आ रहा है 1 प्लस है वो थीटा में थोड़ा गलत लिख दिया इधर 1 प्लस है दिस इज प्लस द फार्मूला 10a minus 10b 1 plus 10a 10b so you will get m1 m2 minus 1 okay as we got just 10 alpha 1 into 10 alpha it is equal to -1 okay now in determining the curvature of the middle surface 1 upon Rx as we studied in our first leg 1 upon Rx is equal to del square W upon del x square. Let me remove this figure. यहाँ तक समझ में आ गया सबको अभिजीत एंड कुणाल Yes, sir. Yes, sir. now curvature 1 upon Rx is equal to minus del square W upon del x square. Consider the curvature positive, it convex downward. If convex downward, A, B, C, D, E. E means क्या fourth हो गई या I should write it E. You that A, B, C, D we heard. D में अभी आया D it was the 10 alpha 2 is equal to minus it was D. Now E. And Ry is equal to क्या बोला था मैंने if we consider the curvature positive if it is convex downward so we take the minus sign in equation E since the deflection convex downward okay about the sign in the same manner we obtain the curvature in the plane parallel to YZ plane it was in the XZ plane and in the YZ plane it is 1 upon Ry equation F. Now consider the curvature of the middle surface in any direction AN. Consider the curvature of the middle surface in any direction Rn. Del square W upon del n square, okay, like this. You can write this
क्या है माइनस डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डेल इन स्क्वायर Here 1 upon r है 1 upon Rn, yes, 1 upon Rx, 1 upon Ry, and in any direction n it is 1 upon Rn. So you can write del square W upon del x square from here, del n square. You can write this as a minus del by del n, del W by del n. Agree? If you open the bracket, you will get the same thing. So from equation 1 or A, our equation, previous equation, Rx के लिए किया था अपन ने, अभी अभी किया है. Yes, sir. So by using that we can write this. From here del by del n की वैल्यू क्या होगी? If this is del w by del n, so what will the value of del by del n from this equation? Del square W upon del square, we wrote like this, del by del n, del W by del n. So del W by del n and del W by del n is this. So what is the value of del upon del n? Just remove the W. क्या था? डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डेल स्क्वायर ये था, डेल बाय डेल एन ऑफ दिस, डेल डब्ल्यू बाय डेल एन इज फ्रॉम आवर इक्वेशन इज दिस. So from this we can find out del upon del n. We remove the w, so put like this. Okay? Yes or not? आया नहीं समझ में अभी मेरे ख्याल से. इक्वेशन ए है ना आपके पास? इक्वेशन 1, Yes, sir. इक्वेशन 1 है. Yes, sir. एन के लिए ही थी ना वो तो, डेल डब्ल्यू बाय डेल एन क्या था? एक्स के लिए थी, क्या थी वो? डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एन डेल एन ही था. हाँ, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एन ये रखा मैंने, कर दिए सब लोग को आगे. आ गया ना अभी ये. हाँ ना, यू विथ माइनस साइन है यहाँ पे बाहर.
ये साइन माइनस है यहाँ. Yes, sir. So you open the bracket, I think. Open the bracket, what you will get? Multiply these. ये मिला क्या? कोई आवाज नहीं आ रही मुझे. Yes, sir. आ गया. आ गया? Yes, sir. So 1 upon Rxy is equal to del square W upon del x del y. So you can put here, so 1 upon Rx cos square alpha minus 2 1 upon Rxy sin alpha cos alpha 1 upon Ry sin square alpha. Here you can write in the next step you can write this as a sin 2 alpha. This 2 sin है cos है. इक्वेशन नंबर ए बी सी डी पांचवी कौन सी होगी? ए बी सी डी ई एफ जी हो गई या तो ये तो. Where 1 upon Rxy is called the twist of the surface with respect to xy axis, where 1 upon Rxy is called the twist of the surface with respect to xy axis. आया क्या? Yes. If instead of direction AN, we take the direction AT perpendicular to AN. Huh? सर इसके बाद में क्या? If instead of direction, instead of के बदले, if instead of direction AN we take the direction AT perpendicular to
this was the AN. Now we took the to this AN 90 degree 80. There are two principal plane always, na, perpendicular to each other. The curvature in this new direction can be obtained. The curvature in the new direction can be obtained पहले थोड़ा इक्वेशन लिख लेना ABCD डेल डब्ल्यू, फिर मैं आगे बता रहा हूँ. 1 2 3 की जगह बुक के हिसाब से लिख लो तो ठीक रहेगा. पहले लिखी थी अपन ने डेल डब्ल्यू बाय डेल एन सबसे पहले इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स कॉस अल्फा प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई साइन एन. दिस इज ए. उसके बाद टेन अल्फा 1 लिखा था डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई और डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स. हाँ बी. फिर लिखा था मैक्सिमम डेल डब्ल्यू बाय डेल एन मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल डब्ल्यू. वो एलसीएम लेके जो आई थी वो, दैट इज सी. देन टेन अल्फा 2 निकाला था इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल, दैट इज डी. टेन अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई डी. देन 1 अपॉन आर एक्स जो लिखा अपन ने माइनस डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स दैट इज ई. फिर अपन ने आर 1 अपॉन आर वाई लिखा था दैट इज एफ 1 अपॉन आर वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर. देन अपन ने 1 अपॉन आर एन निकाला था इन टर्म्स ऑफ साइन 2 अल्फा. ये जो अभी लिखा है ना ये दिस इज जी. दिस इक्वेशन इज जी. नाउ 1 अपॉन आर एक्स वाई जो मैंने लिखा है दैट इज एच. 1 upon r x y is equal to del square w upon del x del y, that is h. This is h. Now you put the value here, alpha, instead of alpha you put alpha plus pi by 2 or pi by 2 plus alpha, vice versa. So you will get 1 by RT instead of Rn, because it is perpendicular to this. Instead of alpha you put the 90 degree, here it was alpha. So alpha में अपने को ये मिला Rn, now 90 plus alpha. So 1 upon RT क्या मिलेगा from here? बताओ 1 upon RX तो रहेगा ही. इसको भी मैं फिर ढंग से लिख दूं. ये जो स्टेप एक आपको हटाई थी ना, अरे राम, साइन 2 अल्फा प्लस ये. Now here you put the, instead of alpha you put this. So you will get here cos square alpha और cos 90 plus alpha क्या होता है पहले तो? Cos alpha और cos 90 plus alpha, what is the value of cos 90 plus alpha? Cos 90 plus theta is equal to sin theta. So you will get sin square alpha. Here
sin theta plus 90 plus theta. साइन में क्या होता है? sin 180 plus theta. Not 180, it is 90. Perpendicular. रणबीर सिंह जी, रणबीर सिंह जी, आर यू देयर? ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले cos 90 plus theta, sin 90 plus theta. What are the values? ये हो जाएगा cos 90 plus theta minus cos theta हो जाएगा. Yes, it is minus cos. But here there are the square, so no problem. Means sin has no value. But here in these terms, one become the sin and cos, so this become the minus. Sin cos होता है ना, so you will get the plus sign 1 upon r x y और यदि आप इसको 2 अल्फा से करेंगे तो 180 प्लस हो जाएगा. सो यू विल गेट द माइनस विद द माइनस साइन. हियर द साइन विल चेंज. ओके, this is equation I. Now you add the equation G and I. G and I, these two. LHS side क्या मिला? If you add these two, 1 upon Rn plus 1 upon RT, this is the LHS side. What about the right hand side? One upon Rx, 2 times 1 upon Rx plus 1 upon Ry. Yes. So we asked this question in the exam कि prove 1 upon Rn plus 1 upon Rt is equal to 1 upon Rx upon 1 upon Ry. This is the equation number 34. And we can ask this question in the exam. So can you prove this? Yes. For 12 number. तो आगे चलें? Now the twist of the surface at A with respect to AN and AT direction. Twist of the surface at A with respect to AN and AT direction is 1 upon R and T.
So, for the assignment you can write the question, prove that 1 upon Rx plus 1 upon Ry is equal to 1 upon Rn plus 1 upon Rt. Now, for a twist in the n, an and at direction, it is 1 upon R n t. You can write this as del by del t of del w by del n, means del square w divided by del n del t, like this. Del w by del n you have from equation A. Yes, sir. क्या है? From A. So, to get del w by del t, you replace alpha with alpha plus pi by 2. Give me the value of del w by del t. Replace this alpha with alpha plus pi by 2. Del upon del t bracket minus del w upon del x sin alpha. Yes. Now, again you put the value here, del w by same, and here eliminate w. Del w by del t, from here if you eliminate w, you can put del by del t. So, it is del by del x of sin alpha, del by del y of cos alpha, and del w by del n is here, del w by del x cos alpha, del w by del y of sin alpha. Agree everybody? Understood or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, find out 1 upon R n t. Open the bracket, multiply the things. What is the first term? First term, Plus del upon del x, del square w upon del x square. So minus minus sin alpha cos alpha. minus यहाँ माइनस था ना, क्या था? You check the sign. I am writing the final. You can check the sign. Huh? minus sin alpha. Then the second is del square w upon del x del y sin square alpha.
प्लस डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा आई थिंक। आ गया। क्या हो गया इसको, थोड़ा एंगल ठीक क्या हो रहा है, क्यों भाई? नहीं, बोर्ड पे मेरा सिर आ रहा है उसका, पहले तो अभी हुआ नहीं था ऐसा शायद कभी। ओके, जूम किया था इसलिए थोड़ा वापस, चलो हल्का सा कर दो, ठीक है कोई बात नहीं, चलने दो, मैं साइड में हूँ, उससे भी नहीं पड़ा फर्क, वो तो ये कम हो गया आपका। हाँ हाँ, दिख रहा है भाई? यस सर। इतना आ गया कि नहीं आया? जस्ट मल्टीप्लिकेशन। यहां ये पूरा माइनस था मेरे ख्याल से, इट वॉज द फुल माइनस ना। Therefore, some terms are minus, some are plus. क्या था? साइन चेक कर लेना थोड़ी सी बात में। So you can put this as a multiply 2 and divide by 2 sin 2 alpha. Yes sir. So 1 upon r n t is equal to 1 upon 2 sin 2 alpha 1 upon rx 1 upon ry plus cos 2 alpha 1 upon rxy। मिल रहा है कि नहीं ये देखो? लास्ट में प्लस cos अल्फा अपॉन 1 अपॉन r x y। cos 2 अल्फा है सर लास्ट टर्म, प्लस cos 2 अल्फा अपॉन 1 अपॉन r x y। हाँ 1 upon rxy। यहाँ ये कॉमन लेंगे आप इनको, दिस टू फर्स्ट एंड लास्ट, साइन 2 अल्फा वहां पे भी करेंगे इसको, डिवाइड बाय 2 and 2। आगे सर। तो कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? डेल स्क्वायर डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स और डेल, सो इट इज 1 अपॉन आर एक्स एंड 1 अपॉन आर वाई। दिस इज विद द माइनस साइन, वन इज विद द माइनस एंड वन इज विद द, सो ये आ गया, और बीच वाली टर्म से ये आ गया। इसमें sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा सेम टर्म होना चाहिए साथ में। डेल स्क्वायर जो अपन sin स्क्वायर अल्फा के साथ ये है। इसके साथ नहीं, यहाँ डेल एक्स वाई आएगा ना एक जगह, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा। पहले क्या इससे मल्टीप्लाई करो, फिर cos स्क्वायर अल्फा है, इसके साथ में cos स्क्वायर अल्फा के साथ में डेल स्क्वायर w लास्ट में डेल स्क्वायर w अपॉन डेल नेक्स्ट डेल y। डेल एक्स डेल वाई, हाँ दोनों ये सेम आएंगे जब भी वो। यस सर, कॉमन लेके रणबीर सिंह जी अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ओके ओके,
अभिजीत, कुणाल, Yes, sir. बाद में थोड़ा ऊपर से गया क्या? बाद वाला थोड़ा ऊपर से गया क्या? आ तो जाएगा ना. यू कैन कॉन्टेक्ट द प्रदीप. आ जाएगा, वो सिंपल है. आएगा. एग्जाम में तो वहां तक ही आएगा. वो अपन ने जो प्रूव किया था ना, 1/RA प्लस 1/RT क्या लिखा था, इजिकल टू 1 इक्वेशन 34. हाँ, वही आएगा. आया तो वही आएगा. और ये तो समझने के लिए है, पर आना तो चाहिए ना. कभी पूछ लेंगे कम नंबर में. आगे थोड़ा सा अलग से पूछ सकते हैं थोड़ा सा इसको. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RN ट्विस्ट RNT है ना. नाउ विल नेक्स्ट आवर relation between bending moment and curvature. Relation between bending moment and curvature in pure bending of the plate. ये भी कई बार एग्जाम में आता है. सो परसों है ना अपना नेक्स्ट क्लास. सो डे आफ्टर टुमारो विल प्रूव दिस. ये दिख रहा है क्या अब इनको? कौन है उधर? थोड़ा सा sometimes we give directly not this equation, but we can ask the prove the relation. क्या लिखवाया मैंने टाइटल अभी आपको? हाँ, तो this is the relation between bending and so you note in your mind, because this is the 1/Rx is the curvature and that mx and my is the moment. So this is दिख रहा है सबको अभी तुम्हारा नहीं हो रहा है. हाँ, पढ़ो क्या लिखा है. हाँ, कौन पढ़ रहा है बताइए. एक जना कोई भी पढ़े. Okay, so sometimes we don't give this equation and so much. We just ask you prove the relation between bending moment and curvature in the pure bending. So you should know this. You have to prove this equation. Okay.
क्या बोल रहे हैं सर? इधर सर आज एग्रीमेंट हो गया कि मतलब कुछ कर देते हैं आप लोग सर? चलो जूम हटा दीजिए अभी। यार मेरा बैग कहाँ गया अटेंडेंस वाला?